Good evening, all of you. Good evening, dear students. Today we are going to talk about a very important chapter in your 10th standard. We are going to study only its introduction and laws. The chapter is Refraction of Light, and in your book it is chapter number 6. Okay, so we're going to talk about what is refraction of light, and we're going to study the laws of refraction given in a book. So let me write down the name of the chapter. This is chapter number 6, Refraction of Light. Okay. We all know what is light. Light is a form of energy, and we all know that refraction is one of the property of light. Okay, what are the other properties of light? We all know light is a form of energy, and light travels in a straight line. The property of light in which it travels in a straight line is called rectilinear propagation of light. Similarly, we also know that whenever a ray of light falls on a surface, a reflecting surface, it bounces back to the same medium. If you remember, suppose this is the reflecting surface and this is the ray of light. It falls on this surface and bounces back, falls and bounces back to the same medium. This property of ray of light, where it falls on a reflecting surface and bounces back, is called reflection of light. Reflection. Here it is refraction, there it is reflection. Okay, so reflection of light is also one of the property of light. Like rectilinear propagation of light, that is the light travels in a straight line. Reflection of light, where the light falls on a reflecting surface and bounces back to the same medium. We have refraction of light. How is refraction of light different than reflection or rectilinear propagation? Okay, how it is different, you already know. If you don't know, understand that if we have a transparent medium, let us say I have a transparent medium, air, and it is separated with another transparent medium, glass. Suppose this side is glass, this side where I've written, this is all glass, and above is air. So there are two media, this, and both are transparent medium. Air is a transparent medium, even glass is a transparent medium. So when a ray of light travels from one transparent medium and falls on another transparent medium at the boundary where the media changes, at that boundary, instead of traveling in a straight line, our ray of light bends. You can see here, it should have taken the path of this dotted line, should have gone straight, but it has bent over here. सीधे जाने की जगह पे ऐसे घूम गया. This bending of ray of light, when it passes from one transparent medium to another transparent medium, is basically what is called refraction of light. So how to remember again? Whenever a ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium, it bends. Okay, how it bends, where it bends, how much it will bend, that we will be studying another day, or maybe we'll be giving you little bit detail in that. Here, if you see, it has bent towards normal. If you know what is normal, we are going to discuss about that also. Okay, so refraction of light is different than reflection of light. Reflection of light में bouncing back to the same medium होता है. जैसे हम क्रिकेट के बॉल को बाउंस करते हैं ना, वापस रिटर्न हमारे पास आता है, वैसे ही रे ऑफ लाइट रिटर्न आता है. बट यहाँ पे रिटर्न नहीं आता है, यहाँ पे बेंड होकर दूसरे मीडियम में चला जाता है. दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेयर it travels from one transparent medium to another, and instead of traveling in a straight line, it bends. That property is called refraction of light. In your chapter, beautifully, the refraction of light is explained with the help of glass prism. Glass prism के help से the textbook has tried to explain you what happens in case of refraction of light. So what do we say? We take a glass prism. It's a three-dimensional glass slab, not the prism here. In the first example, your textbook has taken glass slab. Glass slab is a three-dimensional figure. It's a cuboid. Okay, cuboid shaped ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर है. उससे आपको प्रैक्टिकल स्कूल में होपफुली लैबोरेटरीज में कराते हैं आपको. You know, they keep this glass slab on a drawing paper and then draw its boundary. Glass slab is kept on a drawing paper, its boundary is drawn, then the glass slab is removed. Okay, and after removing, they plot 2 points over here. If you have done the experiment, you can recall 2 points are plotted like this, and at these 2 points there are 2 pins which are inserted. Pin को insert कर देंगे, 2 pins,
either they insert, and then they keep the glass slab again at its position, and we are supposed to observe from here. यहाँ से आपको observe करना है from this side, opposite side to where the pins are kept. यहाँ से आपको observe करना है by keeping one eye closed, and आपको move करना अपने body को, अपनी आंख को इनफैक्ट ऐसे move करना है देखते हुए, so that both the pins appear to be in straight line from this side. You are going to see through the glass slab. You are going to see from here, यहाँ से देखना है, और ग्लास स्लैब के अंदर से देखना है, एक आंख बंद करके देखना है, और आपको पिंस है ना यहाँ से स्ट्रेट दिखनी चाहिए. मतलब आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा पिंस स्ट्रेट लाइन में. कैसे समझेगा? व्हेन यू सी द थर्ड पिन, यहाँ वाला, यहाँ पिन लगाओगे आप, तो आपको ये तीनों पिन एक स्ट्रेट लाइन में कैसे है समझेगा? आपको फर्स्ट ही पिन दिखना चाहिए. यू आर एबल टू सी ओनली द फर्स्ट पिन, पीछे के पिन्स नहीं दिखेंगे. देन यू विल फाइंड दैट दे अपीयर टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर यू आर सपोज टू यूज 2 more pins. कितने पिन्स यहाँ पे लगाने? 2 more, 1 2, and keeping in mind that when you're observing from here, they all appear to be in a straight line. You'll say sir ऐसे straight line तो नहीं दिख रहे वो लोग. आपको ग्लास स्लैब के थ्रू देखना है और ऐसा समझना है कि मतलब ऐसा श्योर होना है कि they are in the straight line, and then you'll put pin 4, pin 3. So आप देखिए यहाँ पे ये P1 है, pin 1, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है. उसको you can name it later on. अभी तो ये पिन है, you can name it as PQRS also, no problem. इसको P बोलिए, इसको Q बोलिए, इसको R बोलिए, ये पिन को, और इसको S बोलिए. You can say that, okay? Or you can name it in different way too. Right now हम लोग सिर्फ P1, P2, P3, P4 बोल रहे हैं. अब ग्लास स्लैब को हटाना है आपको और यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करने. यू आर सपोज टू रिमूव द ग्लास स्लैब एंड यू आर सपोज टू नाउ ड्रॉ द लाइंस. लाइन ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना, यू टू यूज द रूलर. आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन करना है यहाँ पे. ओके, ऐसे पिन P1, P2 को, फिर पिन P3, P4 को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है. अब जरा ध्यान से देखो, आप P1, P2 को जब एक्सटेंड करोगे ना, दे विल गो स्ट्रेट लाइक दिस, लाइक दिस. बट आपका जो आपने ड्रॉ किया है उससे आपको क्या समझ रहा है? आपने जो ड्रॉ किया है उससे तो आपको लग रहा है कि द रे ऑफ लाइट शुड हैव गॉन स्ट्रेट लाइक दिस, बट यहाँ पे जा रहे हो. दैट इज व्हाट इज प्रिसाइजली वी कॉल दैट द रे ऑफ लाइट बेंड्स. अगर आप इंटरनली ग्लास स्लैब के अंदर देखोगे, व्हेन यू ऑब्जर्व इनसाइड द ग्लास स्लैब, यू विल फाइंड दैट दिस रे व्हिच इज passing through P1, P2 has actually bent over here, and it is now traveling like this. If I name it, let me call it as ray P, Q, R, and S. Observe, ray P, Q, R, S. Okay. Actual path taken by the ray of light through the glass slab is P, Q, R, S. Let us put arrows. या arrow डाल देते हैं. ये ray P, Q है, ये ray Q, R है, और ये ray R, S है. Okay. So ray P, Q, R, S is the actual path taken by the ray of light inside the glass slab and out. In reality, अगर आप glass slab नहीं रहेगा तो आपका ray ऐसे सीधा जाएगा. But glass slab मतलब 2 मीडियम आ गए. सुनिए ध्यान से, यहाँ पर air है which is a transparent medium that you already know, और यहाँ पे बाउंड्री के बाद ये जो बीच AB है, इस बाउंड्री के बाद सीधा ग्लास आ गया. तो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 से ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 में जब रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है तो यू कैन सी इट हैज बेंट, एंड प्रिसाइजली दिस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, यहाँ से ऐसे बेंड होना है ना. अभी देखो, आप बोलेंगे सर बेंड यहाँ हुआ है, यहाँ पे क्यों बेंड हुआ है? व्हाई इट हैज बेंड एट CD और DC, यहाँ पर वापस बेंड क्यों हुआ है? थिंक ओवर इट. यहाँ बेंड, ठीक है, एयर टू ग्लास. यहाँ क्यों बेंड हुआ है? सेम रीजन. यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है. Again, your ray of light is coming from one transparent medium to another, so that is why it has again got bent. So bending 2 बार हुआ है. It means refraction of light also has happened 2 times. Okay, one at point Q and the other at point R. So this is what is refraction of light. इसके implications क्या क्या है? Refraction of light की वजह से आपको पेंसिल, अगर आपने ग्लास में टेढ़ा करके रखा हुआ है पेंसिल को, तो आपको बाहर से टूटी हुई दिखेगी. यू फाइंड दैट इट अपीयर्स एज इफ द पेंसिल इज ब्रोकन. अगर आप स्विमिंग पूल में अपने पैर को नीचे रख के बैठे हो, मान लो आपका पैर सिर्फ पानी के अंदर और ऊपर बैठे हो, है ना, तो आपको लगे आपके पैर छोटे हो गए. ठीक है. सो दीज आर बिकॉज व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन, और व्हाई योर लेग्स अपीयर्स टू बी शॉर्टन,
because in the swimming pool, the ray of light is traveling again through two medium, water, जो pool का water है, and then air. तो water से air में आने में वो bend होता है. Your legs have not shortened, pencil has not broken, but because the ray of light bend होता है, ऐसा हमें appear होता है. So students, again, the bending of this ray of light when it passes from one transparent medium to another is called as refraction of light. Okay, this we understood with the help of a glass lab experiment. ये glass lab है, मैंने आपको बताया कि स्कूल में प्रैक्टिकल करते हुए हम क्या करते हैं. We take the glass lab, हम उसको पहले ड्राइंग पेपर पे रख देते हैं. ड्राइंग बोर्ड होता है, उसके ऊपर ड्राइंग पेपर होता है वाइट कलर का, उस पर हम ग्लास लैब को रख देते हैं और उसका बाउंड्री निकाल देते हैं ABCD. फिर ग्लास लैब को हटा देते हैं और दो पिंस को ऐसे अटैच करते हैं. ओके, एंड देन वापस ग्लास लैब को रखते हैं. एंड फ्रॉम अपोजिट साइड, दैट मीन्स दिस साइड, we observe these two pins by keeping one eye closed and see to it that वो दोनों straight line में है. And then we put pin number 3 so that 3 and 2 and 1 all appear to be in straight line. How will you make sure that they are in the straight line? You will keep one eye closed. आपको सिर्फ pin P3 का base दिखना चाहिए, उसके पीछे बाकी छुप जाएंगे. So they are in the straight line. Same procedure for attaching pin P4. ये जब attach कर दिया आपने तो glass lab को हटाइए और PQ, QR, RS बनाइए. So actually, in the absence of glass slab, the ray of light should have traveled in a straight line because the property of ray of light is rectilinear propagation of light. It travels in a straight line. But when it is traveling through the glass slab, ऐसे bend हो रहा है. This bending itself is called refraction of light. अब यहाँ पर हमें at two positions, at position Q and at position R, हमें यहाँ पर perpendiculars drop करने हैं. Q पे drop किया और R पे ड्रॉप किया. अब देखिए, दो जगह आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिए Q एंड R पे, और इन परपेंडिकुलर्स को जो आपने ड्रॉ किया है, यू कैन नेम इट एज MQM डैश एंड NRN डैश, एंड दीज टू परपेंडिकुलर्स आर कॉल्ड नॉर्मल्स. अब इस ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट में, इस डायग्राम में क्या क्या चीजें जो हमें मालूम होनी चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 3 rays are very important: ray PQ, ray QR, and ray RS. Okay, what is ray PQ doing? It is falling on face AB of glass slab, or it is getting incident on glass slab at face AB. That is why it is called incident ray. इसको incident ray बोलते हैं because it falls on face AB. ray QR is the one which has bent first. सबसे पहले bend होने वाला, यहाँ सीधा जाना चाहिए था, bend हो गया. Because it has got bent, it is called refracted ray. Refraction हुआ ना इसका, तो refracted ray. अब दो बार refraction हुआ, इसको तो नहीं बोल सकते कि refracted ray 2 है, because it is coming out of the glass slab. Glass slab से बाहर आ रहा है. That is why this ray is called emergent ray. Remember that, emergent ray. So these 3 rays are very important: incident ray, refracted ray, emergent ray. After that, what are MQM dash and NRN dash? I just told you MQM dash and NRN dash are normals. Normal का मतलब होता है perpendicular. Remember, normal means perpendicular. Aren't they perpendicular dropped on face AB and CD? Face AB पे perpendicular ये drop किया, face CD पे ये. That is why they are normal. Okay. Now interesting thing is, if we observe the normal and incident ray, जब हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे को देखेंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है? ऑब्जर्व दिस एंगल. इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंगल. दिस एंगल which is made between incident ray and the normal, yes, you've guessed it right, this angle which is present between incident ray and the normal is denoted by I, and it is called as angle of incidence. Remember that, angle of incidence denoted by I. Likewise, you can say, sir, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल है, छोटू सा एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल है. Any guesses what will be this angle called? The angle made between the normal and the refracted ray, which means I'm talking about this angle. This angle is denoted by small r, and that angle is called angle of, yes, you're right, refraction. Angle of refraction.
So we've got two angles, angle of incidence, which is the angle made between incident ray and the normal, and angle of refraction, which is the angle made between normal and the refracted ray. So what should be the third angle, and where should that be? एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, बट फिलहाल हम इस एंगल का नहीं ध्यान देंगे, हम ये वाला एंगल का ध्यान देंगे, क्योंकि इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ये नॉर्मल, ये इमर्जेंट रे. The angle which is formed between the normal and the emergent ray is denoted by E, and it is called angle of emergence. Angle of emergence. What is the symbol for that? It is small e. So observe, students, in this very diagram we have got, incident ray, which is the ray which is falling on face AB, refracted ray, the ray which is falling, which is getting bent inside the glass prism, emergent ray, the ray which is coming out of the glass prism, and two normal and three angles, angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence. People ask, what is angle of incidence? It's very simple. There is no rocket science over here. It is very simple to define what is angle of incidence. ध्यान से देखो एंगल किधर बना है, किसके बीच में बना है. The angle is made between incident ray and the normal, therefore it is called angle of incidence. The angle made between incident ray and the normal. ध्यान से देखो, incident ray, normal. The angle which is made between, therefore, in refracted ray and normal, refracted normal, angle of refraction. And the angle made between emergent ray and the normal, angle of emergence. So, dear students, this is what is the definition of refraction of light and glass slab experiment के हिसाब से how the refraction happens whenever ray of light is traveling from one transparent medium to another. अभी यहाँ पर दो बहुत important चीजें हैं बच्चा. One is the laws of refraction. Okay, as per your textbook, state board, there are two laws. आपको दो ही law पढ़ने हैं, laws of refraction में. And second is very important, refractive index. ठीक है? So laws of refraction and refractive index we shall be covering in the very next lecture. Okay, आप comment section में भेजो if you want that laws of refraction and the refractive index. If you write in comment, then I will teach you that. Okay, for now, thank you, and we'll see you once again. All right, bye bye from Vision Educare Academy. Thanks a lot.